welcome back to my YouTube channel Lost Twinkle. In today's video we are gonna go through some important short question answers related to botany. Like in today's video we are gonna go through the two most important topics, which are important definitions, and these are 4 definitions, and we are gonna go through the different groups of plants. So let's begin. Different groups of plants. We have 4 different groups of plants. Okay, hydrophytes, halophytes, xerophytes, and mesophytes. Okay, so let's begin with the first one, hydrophytes. Hydrophytes are the plants that are adapted to live in aquatic environments such as lakes, rivers, and marshes. मतलब ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि bodies के पास पाए जाते हैं. Okay, they have several adaptations that allows them to survive in the water. इनके पास several adaptations होती है जो कि इनको पानी में रहने में मदद करती हैं, such as the presence of air spaces in their leaves and stems to help them float, and the ability to absorb nutrients directly from water. इनके पास pores type एयर सैक्स होते हैं, एयर स्पेसेस होते हैं जो जिनमें से न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दिस वाटर इज डायरेक्टली ऑब्टेन्ड. ओके, और इनको फ्लोटिंग में भी हेल्प अप करते हैं. एग्जांपल हाइड्रोफाइट्स के कौन कौन से हैं, लाइक वाटर लिलीज, लोटस प्लांट एंड डकवीड. And now we are having the second one, which is halophytes. Halophytes are the plants that are adapted to live in the salty environments. मतलब हेलोफाइट्स वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे सॉल्ट की मिकदार ज़्यादा होती है, और वी कैन से किसी कोस्टल रीजन्स पे पाए जाते हैं. ओके, दे हैव सेवरल एडेप्टेशंस दैट अलाउज देम टू सर्वाइव इन सॉल्टी सॉइल्स. अब उनकी एडेप्टेशंस क्या हैं, सच एज द एबिलिटी टू एक्सक्रीट एक्सेस सॉल्ट थ्रू देयर लीव्स. मतलब उनके अंदर ज़्यादा सॉल्ट एब्जॉर्ब ना हो जाए, इसलिए उनके अंदर एक एबिलिटी होती है जो कि उनको सॉल्ट की एब्जॉर्बशन को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करती, जिसकी वजह से वो ज़्यादा सॉल्ट को रिमूव कर देते फ्रॉम देयर बॉडी थ्रू देयर लीव्स, एंड द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉल्टी सॉइल. और उनके पास एक और एबिलिटी होती है कि सॉल्टी रीजन्स में तथा जहाँ सॉल्ट की मिकदार ज़्यादा होती है उनमें से वो लोग न्यूट्रिएंट से भरा वाटर ऑब्टेन करते हैं. दे हैव द एबिलिटी टू रिमूव सॉल्ट एंड टू ऑब्टेन वाटर. एग्जाम्पल ऑफ हेलोफाइट्स कौन कौन सी हैं, मैंग्रोव्स, सॉल्ट बुशेस एंड सॉल्ट ग्रास. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, xerophytes. Xerophytes are the plants that are adapted to live in dry environments, like you can say desert में पाए जाते हैं, arid regions में पाए जाते हैं. They have several adaptations that allow them to survive in these. अब इनकी adaptations कौन कौन सी हैं, like they have the ability to store water in their leaves and stems. मतलब इनके अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो अपनी बॉडी में स्टोरेज कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स की, अपने बॉडी में स्टोरेज कर लेते हैं वाटर की, बिकॉज दे हैव नो आइडिया व्हेन दे आर गोना गेट द मोर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट. और इनके अंदर एक और एबिलिटी भी होती है कि वो अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं. क्यों, ट्रांसपरेशन होती है, दैट इज़ अ लॉस ऑफ वाटर. और उनमें अगर लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा तो फिर देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस. अब हमारे पास एग्जांपल कौन कौन सी हैं xerophytes की, कैक्टस, सक्लेंट एंड सेज बुशेस. नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट वन, mesophyte. Mesophytes are the plants that are adapted to live in moderate, non-extreme environment. मतलब ये moderate environment पे पाए जाते हैं, like we are in Karachi we have several. Okay, or we can say the plants near your home, such as forest, grassland, and waterlands. They do not have the extreme adaptations of hydrophytes, halophytes, or xerophytes, but are still able to survive in the range of conditions. मतलब अब हमारे इन्वायरमेंट में यहाँ पे कभी ज़्यादा ठंड हो जाती है, या फिर कभी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, या फिर कभी रेनी सनी
different kinds of weathers होते हैं, they are able to survive. So these are mesophytes. एग्जाम्पल कौन कौन सी है? ओक ट्री, मैपल ट्री एंड फर्न्स. फर्न की लाइफ साइकिल वी विल स्टडी. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन. No, we are having conclusion about it. Overall, each group of plant has unique adaptation that allow them to survive in their respective environment, whether it be more underwater, in salty soils, in dry condition, or in moderate environment. Now here we are having the important definitions from the examination point of view that they can come. Okay, they could come in your exams. First of all, we have diffusion. I think so that you have already studied about it in your chemistry classes as well. Diffusion is a movement of particles from the ends of an area of high concentration to an area of low concentration. हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है उसे डिफ्यूजन कहते हैं. दिस प्रोसेस अकर्स नेचुरली एंड इज ड्रिवन बाय द टेंडेंसी ऑफ वाटर टू मूव डाउन द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट until they are evenly distributed. Diffusion is an important process in many biological systems such as the movement of oxygen and carbon dioxide and out of cells during respiration. अब इसका रोल बताया गया है प्लांट्स में कि बहुत से बायोलॉजिकल प्रोसेसेस बायोलॉजिकल सिस्टम को कंट्रोल करता है, लाइक द मूवमेंट ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल्स ड्यूरिंग द respiration. That can be acellular respiration or cellular respiration. That can be photorespiration as well. Now we are moving to the next definition, osmosis. Osmosis is a special type of diffusion that involves the movement of water molecules across a semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane वो होती है जिसमें से हमारे पास कुछ particles तो पास हो जाते हैं, बट वो particles जो कि बड़े होते हैं और they are not unable to pass through the membrane, वो पास नहीं होते. That membrane is known as semi-permeable membrane. Osmosis is a special type of diffusion that involves the movement of the water molecules across a semi-permeable membrane from an area of high concentration to an area of low concentration. This process is driven by the difference in the water concentration on either side of the membrane, and it is important for maintaining the water balance in the cells and tissues. Osmosis is also responsible for the movements of the water from the roots of the plants to the leaves through xylem. अब ऑस्मोसिस का रोल प्लांट्स में बताया गया है, लाइक इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट. ओके, वाटर मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से? जाइलम से. जाइलम क्या करता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम टू द ऑल ओवर द बॉडी, फ्रॉम रूट्स टू ऑल ओवर द बॉडी. नेक्स्ट वी हैव वाटर पोटेंशियल. Water potential is a measure of tendency of water molecules to move from one place to another place. Okay, it is influenced by a number of factors including the concentration of solutes in a solution, the pressure exerted on the solution, and the temperature of the solution. Water always moves from an area of high water potential to an area of low water potential, and this movement can be described using the concept of water potential. Water potential क्या है? Measure a tendency of the water molecules जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं. ये किस किस नंबर पे फैक्टर्स पर डिपेंड होती है, इन्फ्लुएंस होती है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, प्रेशर ऑन इन सॉल्यूशन और टेम्परेचर पर. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ऑस्मोटिक प्रेशर. Osmotic pressure is the pressure that is required to prevent the movement of water across a semi-permeable membrane due to osmosis. Osmosis से हमारे पास कंटिन्यूसली हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र हो रहे थे थ्रू अ सेमी-परमिएबल मेम्ब्रेन. लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है जो कि एक जगह के प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से दूसरी जगह के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव थ्रू नहीं हो सकते. मीन्स द मूवमेंट विल बी स्टॉप, ऑस्मोसिस विल बी स्टॉप. इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. अब इसके फैक्टर्स कौन से हैं? कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड हो जाता है जो कि आइदर साइड ऑफ मेम्ब्रेन में हो सकता है. टेम्परेचर एंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन.
Osmotic pressure is an important concept in many biological systems, such as regulation of blood pressure in the human body. So, the video is completed and it is gonna be too long. So, now we are just concluding it. Overall, diffusion, osmosis, water potential, and osmotic pressure are all important concepts in biology that are essential for understanding how particles and water moves across the cell membranes and through biological systems. By understanding the processes, we can gain insight into how living organisms functions and how they are able to maintain homeostasis in a variety of environments. Thank you for watching. Make sure to subscribe to my channel Blast Twinkle. Like and share the video. Allah Hafiz.